पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारी खास मेहमान है द ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड नुपुर सानन, जो कि अपना डिजिटल डेब्यू कर चुकी है डिज्नी हॉटस्टार की कमाल की नीट क्लीन फैमिली कॉमेडी सीरीज पॉपकॉर्न के साथ में। नुपुर से ढेर सारी बातें करेंगे, आगे के प्लान्स भी जानने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नुपुर, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much. Thank you. And I made her wait, so I'm so sorry. Back in another interview. अरे प्लीज यार, मतलब आई रियली होप यू कीप डूइंग अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट वर्क एंड वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू डू इंटरव्यूज टुगेदर, Yes, inshallah, yes. है ना? और अगले इंटरव्यू में आप पहले आ जाना। बिल्कुल अगली में आपका सबसे पहले रखवाऊंगी मैं। Alright, so Nupur, पहले तो from our team, congratulations on this digital debut. So tell me, how does it feel अभी post release? कैसा लग रहा है यार? It's finally there for people to watch. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऑनेस्टली डर लग रहा था बिगिनिंग में बिकॉज दिस केम आउट फर्स्ट बट दिस वाज द थर्ड थिंग दैट आई शॉट फॉर। सो आई वाज नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर माय फर्स्ट टू कम आउट एज अ कॉमेडी। हाँ, So I was a bit skeptical initially कि I don't know if people are going to acknowledge the fact that comedy is pretty serious and comedy में debut करना and वो acting pull off कर पाना, I don't know if people would acknowledge that, कि because a lot of people mostly have acting as अरे इतना अच्छा रोई, अरे ये तो बहुत ही crazy intense scene था. For them, they don't think of comedy as a serious business, which right, it is. right. So I had that thing, but I'm very, very, very happy with the kind of response that we all are getting. Yeah, like we're right now running at #1 on Hotstar, and uh, हमें तो अंदर से पता चल जाता है, तो Hotstar is also pretty happy. So वो खुश तो हम खुश, and कॉमेडी स्पेस में ना सबसे ज्यादा पता आपको कब चलता है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऑथेंटिक चीज से मीम्स बन रहे हैं आप पे, हाँ, right. आप मीम में, मुझे चाहिए था कि मैं किसी ना किसी मीम का पात्र जरूर बनूं। सो वो मेरा सपना पूरा हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी, बट टच वुड, इट्स ऑल गोइंग गुड। या बट टेल मी समथिंग, आई एम श्योर जितने लोगों ने सीरीज देखी है वो भी ये पूछना चाहेंगे, मैं भी पूछना चाह रही हूँ, एंड इट्स नॉट अ स्पॉइलर फॉर दोज हु हैवंट वॉच्ड इट, बट ये जहां एंड हुआ, इट्स सॉर्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ क्लिफ हैंगर, जहां पूरी सीरीज में तो सारे एपिसोड्स में कुणाल के कैरेक्टर के लिए पूछा जा रहा है पॉपकॉर्न। यू आर गिविंग अ स्पॉइलर। ओके, इफ यू वांट टू नो कि मैं क्या नुपुर से कहना चाह रही थी, आपको वो सीरीज देखनी होगी, सो देन यू विल रिलेट टू विद मी। बट टेल मी, ओके, यू नो व्हाट आई वांट टू आस्क, सो शुड वी एक्सपेक्ट सीजन 2? I think you should. I mean, I want to do season two. Right. And see, we also kind of like, when we got into popcorn, we also had that thought that we want to kind of make a season two. Now it's eventually the call of the director and the producers and the channel, whether they feel that this is something that deserves or is worthy of a season two. That call I can't take or make. Right. बट आई थिंक मजा आएगा ना, लाइक आपने देखी है ना पूरा शो, हाँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना सीजन टू? स्पेशली आफ्टर द लास्ट बिट तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये ऐसे कैसे खत्म कर दिया। आई एम नॉट गिविंग अवे एनीथिंग, डोंट वरी। हाँ, बट नो, बट आई लाइक द प्लग इन, आई लाइक द फैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग इट। गाइस, एक कॉमेडी के साथ एक कॉमेडी थ्रिलर भी है। आपको देखने में कुछ पता चलेगा, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आते रहेंगे, एंड एंड तक हम आपको एक ट्विस्ट पे छोड़ेंगे। बिल्कुल। और ऑडियंस ये सोचेंगे दोनों लड़कियां क्या बातें कर रही हैं, कह रहे हैं कॉमेडी है, फिर थ्रिल की भी बात कर रहे हैं, सस्पेंस, तो यार देख लो सीरीज एंड ट्रस्ट मी, वन थिंग दैट आई जेन्युइनली वांट टू टेल यू एंड ऑल द मेकर्स इज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल ओटीटी पे अभी, यू आल्सो एग्री विद इट, ओके? कॉमिक स्टफ भी है, बट फैमिली के साथ बिना किसी हिचक के अगर मैं बहुत समय बाद कोई सीरीज देख सकती हूँ या रेकमेंड कर सकती हूँ जिसमें आई डोंट हैव टू काइंड ऑफ म्यूट नहीं करना कोई मुझे शब्द या या कोई फटाफट से पार्ट, चैनल दिस इज दैट सीरीज यार। कौन देखा? Yeah, our idea also initially, I mean, why it was so refreshing to me when I got associated with popcorn was A, that there's so much dark content, like thriller, dark, dark shows that are Hmm. coming out there on OTT, where I know that I watch OTT in my room alone. My sister watches something else in her room alone. My parents watch something in the room alone. There is a living room TV for what? So our this thing was that comedy की space खाली है,
हम लोग वेस्ट के इतने सिटकॉम्स देखते हैं, फ्रेंड्स कभी भी उठा के देख लेते हैं, हम हाउ आई मेट योर मदर देख लेते हैं, बिग बैंग थ्योरी देख लेते हैं, बट अपने पास क्या है हाँ. देखने को? सो आई थिंक दैट स्पेस वाज खाली, which I felt that popcorn was kind of, filling that void. Hmm. And secondly, I feel that also क्लीन कॉमेडी, मतलब अभी जैसे आप कह रहे हो कि ना आई नहीं है, डिफिकल्ट होता है, पता है। Correct. जॉनी सर उस दिन बोल रहे थे एक इंटरव्यू में दैट नहीं आ रही है ना क्लीन कॉमेडी इतनी, क्योंकि हार्ड है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कि अब तो लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं, लाइक ऑडियंस वाइज भी एवरीबडी इन द वर्ल्ड हैज बिकम सो सेंसिटिव, कि डर लगता है कि यार इस चीज पे जोक उड़ा, पहले तो ठीक था, पहले तो Hmm. हम मारते थे वाले जोक, अब नहीं मार सकते। तो इट बिकेम वेरी हार्ड टू डू दैट। So I think we've somehow managed to kind of be in that zone. Correct, correct. Now tell me about your character Pihu. Uh, how did you relate to her, or how much did you relate to her? कौन से traits अच्छे लगे, and what were things like अरे ये मैं ऐसी तो हूँ नहीं. So बहुत सारी चीजें रिलेट करी मैंने, जैसे कि पीहू एक तो पहली बात इज अ वेरी, for me, she's a very outgoing girl. She's a modern girl, but at the same time, there is a thin line of tradition that's there in her where she could have easily eloped. और हालांकि हमारी स्टोरी में नहीं फिट होता, वो तो खत्म ही हो जाती। बट the fact that she needs her father's approval, चाहे वो ब्लैकमेल कर ले, मेरी कसम खा लो, एक तो ये मैं Hmm. बहुत करती हूँ। ये my friends when they watched this now on the screening, they were like, Nupur, like, is this your element or the direct? I said this was in the script because they always tell me कि मैं इस मामले में ना सच्चाई की मूरत हूँ। जब अच्छा. मुझे लग रहा होता है कि कोई मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, मेरा ये पेट पेटेंट हुआ है, अच्छा कसम खा, मम्मा कसम, मम्मा कसम, मैं कसम खा, मेरी कसम खा, तू सच बोल रही है, आई डू दिस। सो दिस आई वाज लाइक ओके, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है इस मामले में। बट आई थिंक शी इज समवन हु लुक्स एट लॉजिक्स एंड हर चीज में घुस के अपना उसका ओपिनियन है, हर चीज में बोले, बहुत बहुत मुफट है, which I am. I've gotten a lot of elements of myself in it, in terms of where Faratha told me that, I want Pihu to be an innocent looking girl. Uh, but at the same time, I don't want her to be like a princess, and I'm like this. I want her to be like, अरे यार क्या कर रहे हो? I want that Delhi का देसीपना also to come out. You know, so that's I think that's what I got on the table. One thing that I didn't relate with too much, so थोड़ा hard हो रहा था मेरे लिए, but I somehow did whatever I could. Was the no वाला thing, basically. I'm not that person जो ना नहीं सुन सकती, मतलब I'm not that person. Oh, that's a very strong trait that anyone can have, I don't think कोई भी ऐसा होगा. So for me उस point पे it was like कभी ऐसे होता था कि कुणाल का कोई डायलॉग है और मुझे बीच में कट इन करना है, एंड आई हैव टू बी लाइक, साहिल, नॉट टंकी नहीं, यस टंकी, Yes. आई हैव टू, एंड दैट दैट पिच वाली इरिटेशन इज नॉट कमिंग सो मच बिकॉज मुझे अपने आप से इरिटेशन हो रही है कि आप व्हाटएवर आई से, आई मस्ट से यस टंकी एंड ऑल ऑफ हाँ. दैट। आई थिंक दैट टुक अ व्हाइल टू काइंड ऑफ कम इन, धीरे 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 धीरे, बट आई think, yeah, when you're working with such phenomenal actors now, like they're so good at their work, it's 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 like a gift for any newcomer to work with great co-actors, because आपका जो game है ना, they up your game. Like you're going to be Yeah. giving, and you're going to be looking as a better actor than probably that you would be individually. That Yeah, is true. and यही this was my next question only, because एक तो कॉमेडी एज अ जॉनर लोग कहते हैं कि अरे बड़ा आसान है, बट व्हेन यू डू इट, खुद भी अगर हम कोई जोक मारते हैं कभी बिटवीन फ्रेंड्स ऑल्सो, तो जरूरी नहीं है कि उसपे सब हंसे, इट्स नॉट नेसेसरी इट लैंड्स वेल, तो हंसाना बड़ा ही मुश्किल काम है, आप रुला सकते हो आसानी से। तो एक तो जॉनर आपने पिक किया, विच बाय डिफॉल्ट एज यू सेड दिस बिकेम योर डेब्यू वर्क, तो जॉनर Yeah, कॉमेडी, और उसपे भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनको हु आर सिनोनिमस विद व्हेन यू स्पीक अबाउट कॉमेडी, चाहे हम जॉनी की yeah, बात कर लें, हम सौरभ शुक्ला की बात कर लें, लेट सतीश कौशिक जी की बात, कुणाल ऑल्सो फॉर दैट मैटर, जेमी yeah, है, yeah.
all of them. Working with all these people. So were you nervous or were you feeding off from their energies? Both. I think in the beginning I was nervous because my second day was my first day was my intro scene that you see on the bridge. That was my first day of shoot, and my second day was one of the pre-climax scenes where everybody was there. The entire cast was supposed to be there in the same scene, and it was my second day, so I was still adapting with the whole vibe. And Farad sir told us that one shot hoga and camera पहले one पे जाएगा फिर second person पे जाएगा फिर third person पे, so it's not going to break. And मैं शायद fifth इंसान थी, and मुझे पता है मेरे हाथ पैर ठंडे थे कि oh my god भगवान जी प्लीज मैं fifth में I don't want to goof up because फिर ये वापस होगा सबका and everybody's हाँ. fingers and eyes are going to be on me कि oh ये नई लड़की है ना तो इसने ऐसे कर दिया. तो I was so happy जब मेरे से निकल के ना छठे इंसान की बारी आ गई थी. I was like oh that was my relief. So nervousness उस level पे थी where I felt that these guys are so good at what they do, so they will definitely not screw up. हाँ. So I don't want to be the one wasting their energy, So I don't want to be the one that I don't want to be the reason for the extra takes. Right. That is what my like nervousness was about. But I think genuinely एक बात कहूँ, मैं सबसे छोटी थी सेट पे उम्र में, but I genuinely mean this that Satish ji, Johnny ji, Rajpal sir, Saurabh sir, all of them जज्बे में ना, एक्टिंग के जज्बे में ये लोग सबसे छोटे बच्चे हैं. मतलब इनको इतनी खुशी हो रही होती है ना अपनी परफॉर्मेंस करके, और ये लोग इतना सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसे कर दूं फिर मैं ऐसे भी कर दूं. मतलब इट्स सो लाइवली टू सी सम. मुझे लगता है कि आई वांट दैट कि उस उम्र में ना मुझे अपनी एक्टिंग को लेकर आई वांट टू बी दैट बच्चा. सो आई थिंक आई वाज टेकिंग दैट एनर्जी लाइक सो मच फ्रॉम देम. एंड बस यार फिर आई थिंक बहुत इजी हो गई जर्नी विद दीज पीपल. राइट राइट. सो एनीथिंग, ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमेडी सीरीज, तो बहुत सारे कॉमिक सीन्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, सटल ह्यूमर है जो ऑफ कोर्स दिख रहा है, बट एनीथिंग जो बिहाइंड द सीन का हिस्सा है विच ऑफ कोर्स एज ऑडियंस हम नहीं देख पाएंगे, दैट आपको याद आ रहा और आप शेयर करो. So they pulled my leg one day. Okay. नहीं हो तो रैगिंग तो होगी, आप हाँ. एक्सपेक्ट अपने कान और आंख खुले रखो. बट ये लोग बहुत शाणे, इन्होंने ना मुझे बिगिनिंग में बिल्कुल रैगिंग नहीं करी. और जब हम सेट मतलब सीजन के बीच की शूट पे थे ना, जब तक मैं बड़ी वो हो गई थी, अरे सच नाइस पीपल अराउंड मी, सो स्वीट लवली, एंड तब जाके दे डिड समथिंग लाइक दैट. सो you've seen the show, right? So Right, you right. remember the scene where हम बॉम्ब फेंक रहे हैं हाँ and हाँ. the lights डाल रहे हैं and all. So what happened was when Kunal jumped ना, so उसके बाद मेरा और कुणाल का जो फ्रेंड बना है जुबैर, हमारा सीन था where to put laser lights and kind of switch on the. So फरहाद सर और कुणाल का हो गया था वो शॉट, तो कुणाल ये दोनों बैठे ना मॉनिटर के पास, एंड फरहाद सर के हाथ में माइक था, and he was like I'm just gonna guide कि अब स्पीकर ऑन करो, अब पीछे से लेजर लाइट मारो, अब ये करो. So keep doing that because we want to save the like cut. We don't want to cut in. So I was like okay. So he said अब लेजर लाइट मारो, अब नीचे डक करो, नीचे झुको, अब वापस ऊपर देखकर पीछे छुपो पिलर के, अब ये बहुत सारी चीजें बोली, और उसके बाद एंड में उन्होंने बोला अब थूको. सो आई वाज लाइक हाँ, अभी आप सीन के अंदर हो, यू डोंट वांट टू स्पॉइल इतना लंबा सीन जो चला है. सो मैं और जुबैर एक दूसरे को देखा. सो ही सेड थूको, नुपुर कट करना पड़ेगा, नुपुर सीन खराब कर रही है तू, थूको थूको. थूकने को बोल रहे हैं. एंड I and Zubair, we literally started spitting, like सामने ऐसे थूकना start हो गए हम. And then is and cut, and everybody on set was laughing. And this was Kunal and Farad sir's idea. And I think it was so, मतलब anyone would have seen this, ना कि हम दोनों वहाँ खड़े होके थूक रहे हैं एक सीन के लिए. नेम भी नहीं अप्लाई किया हमने अपना कि क्यों थूकता है भाई. So that was funny. I mean, मेरी रैगिंग ऐसे हुई है सेट पे. Right. So yeah, I think it became a very good experience shoot karna bhi, and then when you were seeing all these actors act out their parts, so obviously learning bhi. But you've just stepped into the industry, Nupur. I'm sure there's a lot of work जो आप करना चाहती होंगी, a lot of projects, lot of roles. Top जी. 3-4 अगर on the top of your head हो जो आप share कर सके. What is the kind of work which is offered to Nupur and she will never think twice before saying yes?
So, do you want me to tell you the kind of roles Role, or the kind of project, anything, person you want to work with? Mm, so I think I am someone who's very selective when it comes to मुझे ना मुझे ना थोड़ी meaty roles करने हैं, but also like जैसे जैसे बरेली की बर्फी हो गया, या फिर बद हमती शर्मा की दुल्हनिया हो गया, those kind of roles, जब we met, that kind of Mhm. a that spunk is also coming, but the acting is also there, you know, एकदम serious नहीं. But at the same time, I want to also do something like an Urta Punjab. Like, you know, I want to do something absolutely de-glam, where the only thing that can speak is your acting. You know, Yeah, there's nothing else on the screen. कि भाई कभी कभी ऐसे होता है ना कि कुछ मंडेन सीन या कोई छोटा सीन है जिसमें आपने इतनी ग्रेट एक्टिंग नहीं करी, पर आप बड़े सुंदर right. लग रहे हो, बाल उड़ रहे हैं आपके, तो लोगों का ध्यान ना वो एक्टिंग से थोड़ा कम चल जाता है अगर आपके 20 में से 17 नंबर आए हो. Right, But right. I want to do something, I want to challenge myself for something like that also, wherein I'm so de-glam that it is only my acting that's going to speak. So, let the universe say amen to all of this, Nupur. I'm And happy I'm for you. really, really hoping कि सारे काम and much more आपको मिले और बहुत सारे interviews हम लोग साथ में करें. And I want to be a part of this growing journey of yours where I can say, अरे नुपुर वाले Thank interview में हमने ऐसे बात की थी. So good luck to you. अच्छा जाते जाते you. lastly for people who haven't seen the series yet, so what will you tell पहली बात तो मैं आप लोगों से बहुत इरिटेटेड हूँ कि आपने नहीं देखी अभी तक them? सीरीज. बाय. How बट dare अगर you? हाउ डेयर यू, बट हाउ कुड यू डू दिस टू मी. बट अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, दैट यार इट्स अ वेरी इजी वॉच. इट्स लाइक अ फिल्म. मतलब हमारे 30 मिनट के या 25 मिनट का एक एपिसोड है. आप यू कैन लिटरली binge watch I and you wouldn't didn't. feel guilty about, yeah, you wouldn't feel guilty about finishing one series. It's not that kind of binge watch, you know, it's easy. Hmm. And दूसरी चीज यार जब हम आपको इतना बोल चुके हैं कि there's a little thrill to it in the end and एक कुछ suspense है and we're going to leave you with a little twist, so I really feel that should be enough. और Yes. कहीं कहीं मेरी जुल्फे भी उड़ रही हैं यस. बस. ये जब भी ऐसे हिलती हैं तो फिर बाल क्यों उड़ जाते हैं? ऐसा भी है कुछ ना. सी, You know, मैंने that एंड was तक देखा है. I'm so impressed with you, but that was there in my scenes, कुछ scenes अच्छा. में. अब इतना लंबा भी नहीं करना है तो कुछ चीजें काट ली, तो that's why they put that in the end. But that was also my, like in 3-4 scenes that happened. I have to turn around. I'm like, ये जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ मेरे, मतलब ये हवा कहाँ से आ जाती है, something like हाँ. that. राइट, So राइट. that So भाई Nupur has given us a lot of reasons कि series नहीं देखिए देखिए, and of course Nupur will be there to entertain us for a long long time, God willing. And on that note, Nupur, thank you so much for your time for this interview, and I wish you so much luck for your journey ahead. thank you so much for the lovely questions, and I hope to do another interview with you soon. Definitely looking forward. Bye bye.